Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome again in this class. This is the third video of work. Before going to start, look at these pictures. Students, you may see two pictures on the screen. In the first picture, there is one boy, जिसका name है Ram. In the second, there are three boys. Ram is writing, जबकि ये सारे बॉयज खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग. अच्छा स्टूडेंट्स, डिड यू नोटिस हमने राम के साथ इसका और बॉयज एंड दे के साथ आर का यूज किया है. लेट मी टेल यू, राम इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं. और जब मोर देन वन यानी कि प्लूरल होता है, उसके साथ हम आर का यूज करते हैं. लेट्स सी some rules. Rule number 1. To talk about one person, place, animal or thing, we use is. जब हम किसी one person, place, animals या things के बारे में बात करते हैं, तो हम इसके लिए is का यूज करते हैं. जैसे for person, we can write Rahul is a boy. For place, we can write Taj Mahal is a beautiful place. For animals, we can write Lion is the king of forest. For things, we can write My pen is very beautiful. आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने सारी चीजों को वन यूज किया है और सबके साथ हमने इसका यूज किया. जैसे राहुल इज ओनली वन पर्सन, तो इसके साथ हम इसका यूज करेंगे. Taj Mahal is a monument, so we use is for it. Lion, we are talking about only one lion, so हम यहाँ पर is का यूज करेंगे. Pen is also only one, so we used is. Now next rule is rule number 2. To talk about more than one person, place or thing, we use are. जब हम एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम आर का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर पर्सन, राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट. आपने देखा हमने राम और श्याम दो लोगों के बारे में बात किया, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर प्लेस, Delhi and Mumbai are great cities. दिल्ली और मुंबई क्या दोनों किसी एक सिटी का ही नेम है? नहीं ना. These are the name of two cities. तो two के लिए हम are का यूज करते हैं. Next is for animal. The zebra are stripped animals. यहाँ पर ढेर सारे zebra है, तो हम लोग उसके लिए are का यूज करेंगे. Next, for thing, the books are in the cupboard. Look at the picture. यहाँ पर cupboard में ढेर सारी books हैं, so we use here are. So kids, for person, if there are more than one person, we use are. For place, there are two cities, that's why we use their are. For animals, there are more than one animals, so we use here are. And for things, there are lots of books, so we use here are. So kids, we use is when we refer to one person, thing, place or animal. We use are when we refer to more than one person, thing, place or animal. Now it's comprehension time to check कि आपको कितना समझ में है. Fill in the blanks with is or are. Question number 1. This dash a peacock. Question number 2. These dash fruits. Question number 3. This dash a pencil. Question number 4. This dash a hospital. Question number 5. These dash walls. Now here the answers. This is a peacock because there is only one peacock. So we use here is. These are fruits. So fruits are plural, so we use here are. This is a pencil.
Now, next answer. This is the hospital. These are balls. Now it's practice time. Complete the sentence with is or are. Here are the questions. Rima dash an intelligent girl. Number 2. Priya dash my best friend. Number 3. Suraj and Ravi dash good friends. And number 4. The puppies dash cute. That's it today. Have fun. Take care. Bye bye. Thank you.